Look at the tire. So you can actually see all the threads and stuff over here. It's very risky. I'm not getting a new tire right now. What's happening, people? This is Prajit here with yet another vlog, and right now I'm at Goa, and I'm leaving from here. Right now the time is approximately 6:30 a.m. and yeah, I need to go to Powai. I'm at Vagator right now, and it approximately shows 575 kilometers, so that's approximately 600 kilometers, and it's approximately 12 hours from here. It shows 12 hours. It's because of the ghats and stuff. But yeah, I'm quickly gonna move from here and hit the road, and I'll see you guys on the road then. It's 7:20 right now. Like I left 2-3 minutes back. It's 7:20 right now, and it's pretty chilly right now in the morning. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, if I will ever figure out where the road goes. My total odometer reading right now is 9,421, and I have to go to Powai. It's approximately 527 kilometers, so थोड़ा सा बच जाएगा बेसिकली 10,000 के लिए. मैं सोचा था I'll complete 10,000 this trip, but ठीक है, जल्द ख़त्म करेंगे हम. A small screw up happened that I was about to go out of fuel, and मैं आगे अम्बोली घाट है और मुझे पता है कोई पेट्रोल पंप मिलने वाला है नहीं वहाँ पे. I had to return back, like come back approximately 10 to 12 kilometers to refuel. इस जगह पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यार पेट्रोल पंप का. गोवा से लेकर यहाँ तक मैं रास्ते भर पेट्रोल पंप ढूंढ रहा हूँ कि अभी आएगा. आए नहीं, एक भी नहीं आया. सो आई रियली हैड टू कम बैक. कोई बात नहीं, स्क्रू अप्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरी जर्नी. यही घाट्स थे जहाँ पे मुझे टेंशन था कि गाड़ी बंद पड़ जाएगा अगर पेट्रोल नहीं रहा तो, और अगर यहाँ बंद पड़ गया तो बेटा लेने के देने पड़ जाएंगे भाई. आसपास कोई पेट्रोल पंप नहीं है. चलो, that was a wise decision I made. ये घाट्स मुझे बहुत मज़ा आते हैं यार. यहाँ पे चलाने का फील ही अलग है. It's 9 o'clock right now, and I've stopped at Amboli Ghat for just a cup of tea, and yeah, I'll be moving from here very soon. Approximately 10 hours left from here. Yeah, 10 hours, and Kolhapur is approximately 110 kilometers or something from here. So yeah, once this ghat is over, I'll pick up some better speed. And then just bang on, man. I'll probably reach faster. This whole cart section, it slows you down like anything. Yeah, that's about it. Once I hit the road, I'll switch on the camera again and I'll make you guys see what's happening around. Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground.
ऑफ रोडिंग का टाइम आ गया। क्या रास्ता है, वाह रास्ता भी है क्या। इतने देर से रोड्स बहुत ख़राब थे यार, अब जाके थोड़े अच्छे लग रहे मुझे। और सामने सारा पेड़ ही है आजू बाजू सब, तो चलाने मज़ा भी आ रहा है। लेकिन ऐसे लोग जो है बिना देखे रियर व्यू मिरर, पता नहीं उनके लिए उनको दिया क्यों है, ऐसे ही आ जाएंगे बीच में। ये देखो ये वाले रास्ते बहुत है, वापस ख़राब हो गया। एक पैच अच्छा होता है फिर वापस ख़राब यार। निपानी के पास रास्ते बहुत ख़राब है। नेशनल हाईवे का डाइवर्जन आने वाला है निपानी में, उससे थोड़ा ही पहले 10 किलोमीटर पहले बहुत ज़्यादा ख़राब रास्ता है, बहुत ज़्यादा। So finally I have taken a left turn at Nipani, and right now I've hit the national highway and the roads are amazing. I am right now enjoying my ride. All is well, road खराब ये वो ये, अब कोई लोड नहीं है, अब बस चलते जाओ, मज़े करो, that's it. रोड हो तो ऐसा यार, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। Look at the tire. So you can actually see all the threads and stuff over here. It's very risky and I'm not getting a new tire right now. I'm very scared, that's why I have to maintain a really slow speed, not going above 70 to 80 kilometers. Just stay with me, bro. I need you to be intact. Shit, it's completely screwed up. I'm at Kolhapur right now. I went to the Harley Davidson showroom. I couldn't vlog at that point of time because I'm a little tense right now because my tires are completely worn out. I asked the guys at Kolhapur Harley Davidson if they have new tires so that I can change, but it was not available, and I tried contacting different dealerships also in Kolhapur. Nobody had the tire of my size, so right now it's a problem for me. I can see white threads coming out of the tire right now. It's not a good sign. I'm taking a big risk right now, but I have no other option. I have to go ahead. क्या नज़ारा है बॉस, this is very beautiful, cutting through the valleys and stuff, really nice. No, but back of my mind the tire is like giving me trouble. So I'm almost next to Mahabaleshwar, and there will be a cut. You take a left turn from there, it's Vai, it's a place called Vai, and after Vai it's Mahabaleshwar. Yeah, so when I went to Harley Davidson showroom, the person there told me that आप जाओ बिंदास, कुछ नहीं होगा, थ्रेड बस दिखना चालू है, बस स्टिल यू नो हाईवे पे सडनली कुछ हो जाना, इट्स अ वेरी बिग रिस्क, बट देन आई हैव टू टेक दैट रिस्क, बट आई एम गोइंग वेरी स्लो राइट नाउ, not going fast at all. It's
better to be slower. हाँ 20 मिनट से ट्रैफिक में अटका हूँ यार. ये पुणे पहुँचते हमेशा का ही है. इट्स वेरी बैड, पैथेटिक. फाइनली पुणे आ चुका है. ट्रैफिक फालतूगिरी सब खत्म हो गया. अब आ गया हूँ मैं पुणे. अब सबसे ज़्यादा टेंशन मुझे इसके बाद है. मतलब टेंशन नहीं है, फ्रस्ट्रेशन है इसके बाद. क्यों पूछो क्यों? मुंबई पुणे ओल्ड हाईवे मुझे पसंद ही नहीं है वो. आई हेट दैट हाईवे. Finally crossed Pune. It's 4:35 p.m. right now, and yeah, I think another 2 hours to go. The clouds look amazing. I'm enjoying Mumbai Pune highway for a change, but yeah, I'm loving whatever I'm seeing right now. Yeah, like the sunlight is actually only coming from that particular, you know, the gap between those clouds, and it's looking really nice. I'm ending my solo trip very soon. Last 1.5 to 2 hours to go. Oh my god, it's been a journey, man. What a journey. What different terrains, what different experiences, different people, different feelings. Amazing, like really nice. Solo trips are fun, guys, for people who think, yaar akele kya karunga? Yaar, just take your motorcycle out, just leave, that's it. That's what you need to do. अपना सामान उठाओ, बांधो बाइक पे, चल पड़ो. मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, बहुत मजे किए. My parents, my dad was very supportive, no doubt. My mom was not. Mom is not and will never be. Obviously माँ है, टेंशन तो होगा, हर माँ को टेंशन होता है. Weekend vibes in Lonavala. लोग मस्त चिल कर रहे हैं घाट्स के आसपास. It's 6 o'clock right now. I have reached Panvel, and things are absolutely fine, and I am taking, बोलते ना, चैन वाली सांस. Yes, अब मैं आराम से, अब मैं आ चुका हूँ हमारे जगह पे. This is my home. Back after approximately 38-3900 kilometers. 4000. भाई इतने जगह घूम के आया. ये मुंबई में इतना गर्मी क्यों है यार? लग ही नहीं रहा है विंटर चल रहा है. तो मतलब थोड़ा सा तो विंटर नहीं है, मालूम है मेरे को. मुंबई में कभी विंटर्स नहीं होते हैं, बट थोड़ा टेम्परेचर नीचे तो गिरे. ये ऐसी के ऐसी है. पूरा साउथ इंडिया घूम के आया, सही टेम्परेचर है केरला छोड़कर. बाकी हर जगह अच्छा टेम्परेचर है. यहाँ पे मतलब हमेशा की तरह. मुंबई वेलकम्स मी विद ट्रैफिक एंड हीट एज यूजुअल. आप लोग जस्ट ओडोमीटर पे ध्यान दो. ये देखो, मेरी बाइक 10,000 किलोमीटर से थोड़ी सी चूक गई है. द टोटल रीडिंग, किलोमीटर रीडिंग इज 9,964. Man, I thought I will clock 10,000 when I reach Mumbai, like before I reach Mumbai, but I didn't. But that's okay, very soon I will. Alright, so finally
It's 7:15 right now and I am at Powai from Goa. It's been a nice journey, no doubt. थोड़ा टेंशन था बीच में, बट सब कुछ तरीके से हो गया. अब बस 30 सेकंड में मैं घर, फिर बस बेड, और क्या. आप लोग